Good evening, kids. In today's class, we are going to discuss about the JEE Mains previous year question paper 2024 January shift. The chapter name is The Alternating Current. Please do like, share, and subscribe our channel. Okay, let me start the question. First, in series LCR circuit, the capacitance is changed from C to 4C. To keep resonance frequency unchanged, the new inductance should be. So here is asking about the LCR circuit. So it contains inductance, resistance, and capacitance. And this is connected to an AC source. The capacitance is changed from C to 4C. To keep the resonance frequency unchanged, how much it has to be, how much the inductor has to be raised. The capacitance is changed to 4C. The resonance frequency is F0. Okay, like हम सीधा resonance frequency का फर्स्ट सर्क्यूट में फॉर्मूला क्या है? F0 equal to 1 by 2 pi LC. सेकेंड सर्क्यूट में एल डैश का वैल्यू पता नहीं, एल डैश फाइंड आउट करना है. तो हम कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज कर रहे हैं. कितना चेंज कर रहे हैं हम? चेंज फ्रॉम C to 4C. देन एल डैश कितना होगा? एल डैश का वैल्यू, तो F0 इसका F0 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. दिस विल बी 2 pi LC L dash C 4C. तो इसका होगा नो L dash 4 L dash should be equal to L और L dash equal to L by 4. कितना हम रेड्यूस करना है यहाँ पे? इसका पिछला वैल्यू कितना था? L था. अब L को हम कितना कर चुके हैं? हम L dash by 4 हो चुका है और L by 4 हो चुका है. तो कितना रेड्यूस हुआ? पहले L था, now the value is L by 4. So how much it got reduced? Reduce means कितना घट चुका है और कितना कम हो चुका है. So we'll do one thing. L initial value L, final value L dash. Delta L calculate करेंगे. This will be delta L. Delta L कितना हुआ? 3L by 4. Reduce means here कितना कम कर सकते हैं हम. और बेटर टू टेल आपका हिंदी में कितना घट चुका है, कितना कम कर सकते हैं हम, कितना कम हो चुका है. तो 3L by 4. पहले वैल्यू कितना था? L, अब L by 4. तो कितना रिड्यूस हुआ? 3L by 4 रिड्यूस्ड. तो दिस विल बी आवर आंसर. आई थिंक सिंपल फॉर्मूला बेस्ड. यहाँ पे रिड्यूस्ड थोड़ा वर्ड लिटिल बिट लॉट ऑफ कंफ्यूजन. थोड़ा आप एग्जाम में जब आप पढ़ रहे हो ना, लिटिल बिट यू हैव टू बी अलर्ट. इंक्रीज्ड, रिड्यूस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे. ए ट्रांसफॉर्मर has an efficiency 80% and works at 10 volt 4 kilowatt. If the secondary voltage is 240 volt, then the secondary current in the coil is asking. So transformer, basic transformer का working, a primary coil है, and we are discussing step up transformer, and ये वाला secondary coil है. Current in the secondary coil. रेजिस्टेंस के कार में कुछ भी पता नहीं. ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी इज टेलिंग. देखेंगे व्हाट डू मीन बाय एफिशिएंसी. वर्क्स एट 10 वोल्ट एंड 4 किलोवाट. इसका वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट. ये प्राइमरी वोल्टेज है. और इस यहाँ पे प्राइमरी का पावर कितना दे चुके हैं? 4 किलोवाट.
देन सेकेंडरी का वोल्टेज कितने में ऑपरेट कर रहा है, 240 वोल्ट। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न सेकेंडरी बारे में कुछ भी पता नहीं है, पावर के बारे में पता है। So transformer का power, transformer is a device which will obey the conservation of energy principle. Means जितना power secondary में है, वही power primary में रहता है. Power in the primary equal to power in the secondary. But what is the problem is 80% of efficiency. Means थोड़ा बहुत यहाँ पे power it will get lost due to coupling. Due to coupling losses it has become 80%. Means primary में कितना power है? Ideal transformer में पावर अक्रॉस प्राइमरी शुड बी इक्वल टू पावर अक्रॉस सेकेंडरी। जितना यहाँ पे पावर प्राइमरी में वो सारे सब कुछ ट्रांसफर हो जाता है, बट इज टेलिंग 80% एफिशिएंसी मींस 20% इज लॉस्ट। हियर विल राइट इट, 20% is lost due to coupling. So therefore we can't write power in the primary equal power in secondary. In fact power in the primary कितना है 4 किलोवाट। Power in secondary efficiency 80% means 0.8% of power in the primary into 4 into 10 to the power of 3. Then what is the current? So we can write like this. Power in the secondary should be equal to IP into Vs, 0.8 into 4 into 10 to the power of 3. IP का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो सेकेंडरी का वैल्यू कितना दिया है 0. So this will be 8 into 4 into 10 to the power of 2. 8 into 4 into 10 to the power of 2 by 240. इसका हम कैलकुलेट करेंगे। ये हुआ 30, बाद में दिस विल बी 4 by 30, 2 by 15 into 10 to the power of 2, 10 to the power of 2 100 कर देंगे हम। तो दिस का हुआ 3 और दिस विल बी 20। सो 40 by 3, 40 by 3, 13.33 ampere. Small idea. For ideal transformer, power across primary should be equal to power across secondary because of loss in power. So power in secondary will be less than power in the primary. Simple idea transformer ka. Then always power is what? Current into voltage. Just basic formulas याद कर लो, it will be easier for you. Next problem ले लेंगे। Primary side of transformer. Let me draw the transformer. Primary side. It is connected to ट्रांसफार्मर में दो तरह के रहते हैं, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। स्टेप डाउन बोले तो सेकेंडरी का वोल्टेज अगर प्राइमरी से कम रहे तो उसको हम क्या बोलते कि स्टेप डाउन बोलते हैं। अगर प्राइमरी का वोल्टेज सेकेंडरी से कम आई बोले तो देन इट बिकम स्टेप अप। सो हियर प्राइमरी का वोल्टेज कितना है 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज। प्राइमरी साइड ऑफ ए टाइमर, इसको हम प्राइमरी बोलते हैं। ये जो है ना दिस विल बी सेकेंडरी। Connected to load resistance is connected to secondary side. This is RL 46 ohm. यहाँ पे कितना पावर कंज्यूम हो रहा है? So we'll calculate this IS, यहाँ पे IP. The turn ratio of primary to secondary, number of turns of primary to secondary is 10 by 1. Then I think आप अगर आप what is the power directly power consumed in it बोले तो लोड में
this called as load resistance. This in this load resistance, how much of power consumed? मीन्स यहाँ पे कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, लोड में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है. कौन कंज्यूम करता है? जब एक करंट फ्लो हो रहा है, then this I square SL, this current square into RL is what? Power consumed. What we have to find out? Power consumed in the load equal to I square S into RL. We have to calculate IS. Then 230 volt. और अगर IS नहीं है तो then we can go for VS square RL. तो हमें यहाँ पे सेकेंडरी का वोल्टेज पता है, प्राइमरी का वोल्टेज पता है 230 वोल्ट AC. देन सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड आउट करना है. Like if you see this one, it's a step down. The turn ratio of primary to secondary is 10. It's a step down transformer. Means secondary का voltage कम रहता है. Then so how much we should write here? Bs equal to, what is the formula? The ratio Vs by Ns should be equal to Vp by Np. Vs equal to Ns by Vp by Np. Ns by Np का वैल्यू कितना है? 1/10. प्राइमरी का वोल्टेज कितना दे चुके हैं? कितना दिया है? 230 volt. So this will become 23 volt. Okay, fine. Step down transformer meaning, उसका मीनिंग क्या है बोले तो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से कम रहता है, दैट्स कॉल्ड एज स्टेप डाउन. अगर सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से ज्यादा रहे तो उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं. स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ का सेकेंडरी प्राइमरी से ज्यादा रहता है. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी का प्राइमरी से कम रहता है. तो इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो व्हाट इज द बैकग्राउंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, number of turns of secondary less than that of primary, voltage across secondary less than primary, power across secondary equal to power of primary. Step up transformer, इसमें secondary का turns primary से ज्यादा रहता है, secondary का voltage primary से ज्यादा रहता है, और current in primary secondary सेम रहता है. और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में करंट सेकेंडरी में प्राइमरी से ज्यादा रहता है, और करंट सेकेंडरी में स्टेप अप ट्रांसफार्मर सेकेंडरी से प्राइमरी से कम रहता है, सेकेंडरी का करंट प्राइमरी से कम रहता है. तो दिस इज व्हाट एक्चुअली द बेसिक स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कॉन्सेप्ट. ओके, यहाँ ओके, नाउ कम बैक टू दिस वन. हमें यहाँ पे सेकेंडरी का वोल्टेज मालूम है, लोड रेजिस्टेंस दे चुके हैं, तो विल कैलकुलेट द पावर. सो द फॉर्मूला PL इक्वल टू VS स्क्वायर बाई RL. अगर तुमको सेकेंडरी का करंट के बारे में इंफॉर्मेशन है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो तुम. तो हमें क्या है कि लगे वी नो सेकेंडरी वोल्टेज यहाँ पे, और लो रेजिस्टेंस दे चुके हैं, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो विल गेट द आंसर. नो, तो VS स्क्वायर 23 स्क्वायर बाई 46. तो सॉल्व करने के बाद 11.53, दिस विल बी आवर आंसर. फाइन. सो दिस द कॉन्सेप्ट. जब आप स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे तो सो दिस द बेसिक फॉर्मूलास, ये सब याद रहना चाहिए. बिना फॉर्मूले आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते. आपको आपको कॉन्सेप्ट पता है, फिर भी आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहे तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते ना. तो मेमोराइज द फॉर्मूलास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे. ए सीरीज LCR सर्क्यूट, एल का वैल्यू दे चुके हैं, यहाँ पे दिया है, कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया है, और ए रेजिस्टेंस का वैल्यू इज कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सोर्स 220. पावर फैक्टर ऑफ द सर्क्यूट. डायरेक्टली यहाँ पे हम सर्क्यूट डालेंगे. पहले ए इंडक्टर,
capacitance and A वाला resistance will connect across AC source. सीरीज एलसीआर सर्किट, तीनों एलिमेंट यहाँ पे सीरीज में है. फाइन. ओके. नो. पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट पूछ रहे हैं, तो इसका हम पहले ये करेंगे. अक्रॉस इंडक्टर वोल्टेज लीड्स करंट. अक्रॉस कैपेसिटर करंट वोल्टेज लैग्स करंट. अक्रॉस रजिस्टर करंट एंड वोल्टेज दोनों इन फेज में रहते हैं. दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज वीआरएमएस. कितना? 220 वोल्ट. 50 इयर्स दे दिए है यहाँ पे. इसका वोल्टेज, इसका ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. सो यहाँ पे दिस विल बी वीएल, वीसी, ए हुआ वीआर एंड दिस इज आईआरएमएस एंड ए वाला वीआरएमएस. तो इसका वोल्टेज ट्रायंगल वीआर, वीएल माइनस वीसी, वीआरएमएस, ए फेज एंगल. पावर फैक्टर के बारे में पूछ रहे हैं. देन इससे इसके वोल्टेज ट्रायंगल से इंपिडेंस ट्रायंगल प्लॉट करेंगे. इंपिडेंस ट्रायंगल ए वाला जेड आर ए एक्सएल माइनस एक्सी. तो यहाँ पे हम cos phi पावर फैक्टर को ही what it is called as cos phi is called as power factor here. This angle is called as a phase angle. This will become r by z, r by root of r square xl whole square. So xl के बारे में, xc के बारे में, do we know have any values? अब इसको कैलकुलेट करेंगे. ओमेगा एल, ओमेगा कितना हुआ? 2 पाई एफ एल. एक्सी का वैल्यू कितना? 1 बाय ओमेगा सी, 1 बाय 2 पाई एफ सी. इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना है चेक करेंगे पहले. 1 बाय 2 पाई रूट ऑफ एल सी. एल का वैल्यू कितना है? 100 पाई. सी का वैल्यू 10 माइनस 3 पाई. टू इंटू 0.1 100 पाई पाई मिली एंड्रिया. तो थोड़ा वैल्यूज दोबारा कैलकुलेट करेंगे. 10 टू पावर ऑफ माइनस 3 हुआ. सी का वैल्यू 10 टू पावर ऑफ माइनस 3 बाई पाई. कुल मिला के सब पाई पाई, ए पाई कैंसिल हो जाता है. ए पाई और ए पाई इससे कैंसिल हो जाता है. 10 टू पावर ऑफ माइनस 3 10, 10 टू पावर ऑफ माइनस 3 10, 10 टू पावर ऑफ माइनस 4, 10 टू पावर ऑफ माइनस 2. बाहर कितना? तो टोटल 10 टू पावर ऑफ माइनस 2, 10 टू पावर ऑफ माइनस 2 ए 100 बाई 2, 50 इयर्स. तो सर्किट का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वैल्यू कितना है? 50 इयर्स. अप्लाइड वोल्टेज कितना है? 50 वोल्ट. 50 years. When it be resonance? When applied voltage becomes equal to resonant frequency of circuit, then it is said to be resonance. Fine. So therefore, the circuit is in resonance. At resonance, what is the power factor? Should be equal to 1. At resonance, XL equal to XC. अगर XL equal to XC means this will become cos phi equal to R by root of R square. R by R. So power factor का value 1. This is a basic idea resonance का.
यही से हम फॉर्मूला यहीं से डिराइव करते हैं. Okay, at resonance, power factor is 1 and the power dissipated will be maximum. Just simple idea of the series resonance. अगर आपको directly पता है theoretical information that at resonance power factor will be 1 means directly यहाँ पे आपको आंसर 1 लिख दीजिए. नहीं तो कैसे डिराइव करना पड़ता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे. In an AC circuit, voltage and current respective, the average power dissipated in one cycle. पहले क्या क्या पता है. ए वाला तो फेज एंगल है, फेज एंगल ऑफ सर्किट. ये तो ओमेगा वैल्यू है. दिस इज आई एम, दिस इज वी एम. एग्री दिस. सो यहाँ पे वी एम का वैल्यू कितना हुआ. वी एम इज इक्वल टू 100 वोल्ट. इससे हमें वी आर एम एस मिलेगा. वी आर एम एस कितना हुआ. वी एम बाई रूट टू, 100/√2. यहाँ पे आई एम का वैल्यू कितना है. 100 एम्पियर. आई आर एम एस का वैल्यू कितना है. आई एम बाई रूट टू, 100/√2. ओमेगा का वैल्यू 100. यहाँ पे दे ओमेगा टी. ओमेगा टी ये जो एंगल यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं ना, सो दिस इज द फेज एंगल. सो इसको हम फेज एंगल ऑफ सर्किट बोलते हैं. लुक एट यहाँ पे आप. करंट लीड्स द वोल्टेज इन द गिवन सर्किट. करंट लीड्स द वोल्टेज. So what is the average power dissipated? Average power dissipated equal to VRMS, IRMS, cos phi. VRMS का वैल्यू कितना है. 100√2. IRMS का वैल्यू यहाँ पे 100√2. Cos of pi by 3. This will be यहाँ पे 100 into 100 to cos pi by 3. Cos 60 1/2. So current is in milliampere. एक थोड़ा वैल्यू वैल्यू यहाँ पे लगा देता हूँ. 100 मिली एम्पियर बोल तो 10⁻⁻3. यहाँ पे 10⁻⁻3 एडजस्ट कर लेंगे. 10⁻⁻3 इंटू 10⁻⁻3, दिस इज 1/2. कुल मिला के कितना हुआ. 10/4. सो दिस विल बिकम 2.5 watt. ये जो एवरेज पावर डिसिपेट हो रहा है अक्रॉस द रजिस्टर. सर व्हाट इज द सर्किट. सर्किट क्यों नहीं ड्रॉ करें हम. ओके, वी कैन ड्रॉ द सर्किट. यहाँ पे तो ये करंट लीड्स द वोल्टेज. सो दिस द रजिस्टर, दिस द कैपेसिटर, दिस द रजिस्टर. ओके, आरसी सर्किट. दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी. नॉट दिस वन ओनली, दिस वन ऑफ द पॉसिबिलिटी. यहाँ पे कौन डिसिपेट करता है. रजिस्टर ओनली विल डिसिपेट द पावर. इन एसी सर्किट में कौन पावर डिसिपेट करता है. रजिस्टर ओनली. सिंपल दिस पर्टिकुलर ए तो ए फॉर्मूला तुमको याद रहना चाहिए. और सर एनी अदर फॉर्मूला इज देयर. एवरेज इक्वल टू IRMS स्क्वायर आर. से हमें IRMS वैल्यू पता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू पता नहीं यहाँ पे इंफॉर्मेशन में. ओके सर, देन VRMS इंटू IRMS क्या होता है. देन इट विल बिकम ZR. VRMS इक्वल टू IRMS इंटू Z विल बिकम VR equal to IRMS into R. VC equal to IRMS into XC. Okay, agreed? Huh? This is the Ohm's law. VRMS into IRMS will not become R, will become impedance. VR equal to IRMS into R. This is Ohm's law across resistor. Voltage drop across resistor equal to IRMS into XC. ओके किड्स, लाइक ए सिंपल फॉर्मूलास तुमको यहाँ पे
एनालाइज करना है, सो द क्वेश्चन विल बी वेरी इजी। इनफैक्ट आपको ये इक्वेशन, साइनोसोडियल इक्वेशंस ड्रॉ करने का जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली टेक हेल्प ऑफ दिस बेसिक फॉर्मूला। I will take the next question. Primary coil of a transformer is connected to 220 volt AC. This is the primary coil. Okay, fine. This is connected to 220 AC volt. Then primary and secondary turns of transformers are 100 and 10. यहाँ पे हम लिख लेंगे प्राइमरी का टर्न्स कितना है 100, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ प्राइमरी। सेकेंडरी का टर्न्स कितना है 10। Secondary coil of transformer is connected to two series resistance 5, 15 kilo ohm, 7 kilo ohm, as shown in figure. The output voltage, यहाँ पे आप आउटपुट वोल्टेज पूछ रहे हैं, तो हमें ये सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड आउट करना है, एंड हमें प्राइमरी वोल्टेज पता है, नंबर ऑफ टर्न्स का सेकेंडरी यहाँ पे इन्फॉर्म कर चुके हो, एंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सेकेंडरी का भी मालूम है। तो यहाँ से हम voltage across secondary coil will find out. Then we can use the voltage drop. Potential divider will find out the drop across 7 kilo ohm. ये जो है ना, this circuit is primary, this circuit is secondary. Then what is the formula? Voltage drop across secondary equal to number of turns of secondary into number of turns of primary into primary voltage. Then number of turns का secondary कितना है 10, that of primary 100, 8 to 30 volt. Then voltage drop across secondary will be 23 volt. Then potential divider formula. Then the drop V naught should be equal to voltage across secondary into 7 kilo by 15 into 10 to the power of 3 plus 7 into 10 to the power of 3. सर लगे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हम, व्हाट इज दिस फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख रहे हैं। वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला अगर आपको याद रहे तो वेरी इजी है। इसका वोल्टेज कितना है V2, व्हाट इज द फॉर्मूला I, व्हाट इज I is equal to V by R1 plus R2. Ohm's law across this resistor. What is Ohm's law? Ohm's law will be V2 equal to I into R2. VR2 by R1 plus R2. This is the formula. Similarly, V1 equal to IR1. VR1 by R1 plus R2. ये जो आइडिया है ना, दिस इज द पोटेंशियल डिवाइडर कॉन्सेप्ट। एसी और डीसी दोनों सर्किट्स को सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला। नाउ यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। दिस विल बी 23, 7, 15 plus 7, 23 into 7, 15 plus 7, 22. इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 23 into 7, 23 into 7, 161 by 22. 7.3, 32 volt or nearest 7.3 volt. Now very important, ट्रांसफॉर्मर जस्ट 1 hour में आप ऐसा समझ के रिवाइज कर सकते हैं। फिनिश होल बाद में 3 फॉर्मूलास है,
को 3 फॉर्मूला याद करने पर हो गया फिनिश. दिस चैप्टर इज मैनेजेबल. This complete AC circuit is manageable. We have to calculate the drop across this 7 kilo. V not पूछ चुके, so answer is 7.3 volt. Next question ले लेंगे. A series LR circuit connected across AC source. Series LR circuit. Resistor, इंडक्टर और एसी सोर्स है. इसका ईएमएफ कितना लगे? 25 साइन 1000 की. फाइन. पावर फैक्टर कितना? यहाँ पे 1/√2 दे दिए हैं. पहले पहले सो दे रजिस्टर इंडक्टर एलआर सर्क्यूट यहाँ पे सोर्स को कनेक्ट कर चुके हैं. इसका पावर फैक्टर कितना है? 1/√2. पावर फैक्टर इज 1/2. cos phi1 is 1/√2. If the source of EMF is changed to the new power factor of circuit, इसका नया पावर फैक्टर कितना होगा? हम क्या चेंज कर रहे हैं? वी आर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी. देन व्हाट इज द पावर फैक्टर? पावर फैक्टर अगर आप इस सर्क्यूट ड्रॉ कर इंपीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, एक्सएल और ए व आर. So this is the one basic formula. Cos phi is equal to R by Z, R by root of R square plus XL square. आगे यहाँ पे ऐसे करेंगे. Cos phi 1 R square plus omega square L square. हमें क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पे? पावर फैक्टर 1/√2. इसका वैल्यू कितना हुआ? 1/√2 R रूट ऑफ R स्क्वायर. ओमेगा का वैल्यू कितना है? 1000. ओके, दिस सेम वैल्यू ले लेंगे. R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर. नेक्स्ट इसी सर्क्यूट दूसरा सर्क्यूट में रजिस्टर, इंडक्टर, पावर फैक्टर. इसका नया पावर फैक्टर का वैल्यू कितना है? तो इसका वैल्यू 20 साइन ऑफ 2000. इसका नया वैल्यू एक्सएल डैश और एक्सएल नॉट समथिंग इंडिकेट करेंगे. नया इंपीडेंस वैल्यू, इसका इंपीडेंस वैल्यू Z0. आर का वैल्यू इट विल रिमेन सेम. तो cos phi 2 वैल्यू और ओमेगा का वैल्यू कितना? अर्लियर कितना था? ये 1000 था. अब ओमेगा वैल्यू कितना कर रहे हैं हम? 2000. सो वी आर डबलिंग द ओमेगा. 2 ओमेगा हम कर रहे हैं. तो दिस विल बी आर स्क्वायर इक्वल टू 2 ओमेगा एल होल स्क्वायर. एक्सएल नॉट होल स्क्वायर. R by root of R square 2 omega L whole square. R by R square 4 omega L A वो 4 XL square है. यहाँ पे हम और एक फॉर्मूला लगाएंगे. tan phi 1. tan phi 1
will become XL by R. पावर फैक्टर 1/√2. सो मीन से फेज एंगल का वैल्यू कितना होगा? cos phi 1 अगर ए हुआ 1/√2 बोले तो phi 1 का वैल्यू कितना है? π/4. तो tan π/4 इक्वल टू 1. तो XL इक्वल टू R. यहाँ पे हम वही वैल्यू यूज करेंगे. दिस विल बी R root of R square 4R square हुआ. This will become 1/√5. So A हुआ नया पावर फैक्टर. उसका वैल्यू कितना है? 1/√5. ए हुआ हमारा आंसर. आई थिंक वेरी गुड क्वेश्चन है. आपका सब दिस ट्रायंगल ड्रॉ करने भी कॉन्सेप्ट है. इवन आप ये सर्किट ड्रॉ नहीं कर रहे, ओके, नो प्रॉब्लम, डजंट नीड इट. इसलिए कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए ये सर्किट ड्रॉ करना पड़ रहा है. आपको एग्जाम में पावर फैक्टर इम्पिडेंस ट्रायंगल में पावर फैक्टर क्या है? cos phi is what? Adjacent by hypotenuse R/Z. यहाँ से शुरू करना है. एंड सम इंफॉर्मेशन यहाँ पे है कि लाइक वैल्यू दे चुके हैं 1/2. तो यहाँ पे हम एक्सेल एंड आर के बारे में कुछ भी पता नहीं है. सो वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ दिस 1/√2 वैल्यू एंड वी आर गेटिंग रिलेशन बिटवीन एक्सेल एंड आर. वेरी गुड क्वेश्चन है. थोड़ा बहुत लाइक अननेसेसरी इन एग्जाम्स यू शुड नॉट ड्रॉ दिस डायग्राम. यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने से मेरे को आई टू मेक स्टूडेंट्स टू थिंक. जो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो मैं समझ पाने के लिए या मैं सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ. अदरवाइज इन एग्जाम यू शुड ड्रॉ ओनली दिस ट्राइंगल. अगर ट्राइंगल भी तुम्हें याद है बोले तो डायरेक्टली ये इक्वेशंस लिख दो. हाँ, अगला क्वेश्चन ले लेंगे. An alternating voltage 220 into sin 100 is applied to purely resistive load. The time taken for the current to rise from half of the peak value to peak value. Time taken by the current to rise from half of the peak value to the peak value. What is the expression for current? I equal to V of T by R. V of T is 220. R का वैल्यू कितना हुआ? 50. 22/5. ये जो पीक वैल्यू है, टाइम टेकन फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक वैल्यू टू द पीक वैल्यू. देन a rough diagram plot करेंगे. This is the sine graph. This is the peak value. Time taken from year to year. We have to calculate this time. This is Im. This is I of t. What is this time? A तो हुआ T/4 ना. Time taken for the current to become from 0 to Im/0 to Im will be T/4. अब आप ये टाइम पूछ रहे हैं. How much of time it will take for the current to become Im/2 to Im? हम क्या करेंगे? लेके time taken for 0 to Im is T/4. Then we'll calculate this time taken for the current to become 0 to Im. ये टाइम कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे T/4. Then we'll get this value. Okay, यहाँ पे
call this is T2. This is T1. यहाँ पे मैं indicate कर रहा हूँ. No need of diagrams in exam. In exam, आपको directly you have to take help of mathematics here. Okay, now what is the time taken T by 4? Omega का value कितना है? Omega यहाँ पे omega value is 100 pi. 2 pi by T equal to 100 pi. T equal to 2 by 100. This will be 0.02 seconds. T by 4 value. T by 4 value will be 0.005 seconds. 1/4 of this value. T by 4. T by 4. This will call it as say some T naught. T naught is how much? T naught will be 1/4 of time period. T by 4. 0.02 by 4. 0.005 or 5 milliseconds. This is the time taken for 1/4 of cycle. Okay, fine. Now time taken for the current to become 0 to Im by 2. Im by 2 is this one. Im is this one. Im by 2. 22 by 5 off of it equal to 22 by 5 equal to sine of 100 pi t. Then this will become sine inverse of 1 by 2 equal to 100 pi t. Sine inverse of 1 by 2 will be pi by 6. 100 pi by t. This time is t1. इसका pi cancel हुआ. t1 equal to 1 by 600. 0.01 by 6 seconds. Okay, fine. So 1 by 6 value, 1 divided by 6, 0.167. Zero point zero zero one six seven. Okay, this will become 1.67 milliseconds. We'll calculate T2 now. T naught is equal to T1 plus T2. Okay, fine. Yeah. No, T naught value कितना है? 5 milliseconds. T1 value आप एक कैलकुलेट कर चुके हैं 1.67 मिली. T2. तो T2 आपको करीब 3.3 milliseconds. This will be your answer. A very simple problem. There's a background. You should have this diagram background, little bit easier. I'll take the next question. A power transmission line feeds input at 2.3 kilovolt to a step down transformer. यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मर कितना वोल्टेज 2.3 किलोवोल्ट. दिस इज प्राइमरी वोल्टेज. इसका नंबर ऑफ टर्न्स P. स्टेप डाउन नंबर ऑफ टर्न्स में सेकंड में कम रहना चाहिए NS. The output power delivered is
230 वोल्ट, ये सेकेंडरी वोल्टेज हुआ। यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, IS। प्राइमरी करंट कितना है, IP। द करंट इन द प्राइमरी इज 5 amperes. 90% efficiency. Some losses are there. Then what is the power in the primary? पहले हम, okay, this one is primary winding having 3000 turns. So we are having number of turns will be 3000. The current in the primary is 5 ampere. प्राइमरी का पावर कैलकुलेट करेंगे, द आउटपुट करंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। सो हमको यहाँ IS वैल्यू फाइंड आउट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IS। So first power in the primary of the transformer, that should be equal to power in the primary into voltage applied across primary. This is the voltage applied across the primary. Current flowing in the primary 5 ampere. यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, P इंटू 2.3 इंटू 10 to power of 3, 23, 5 इंटू 23 इंटू 10 square, 115,11500 watt. This is the power in primary. Efficiency कितना है, 90%, मीन्स एक 10% यहाँ पे लॉस हो रहा है। सर व्हाट आर द लॉसेस, मेनी लॉसेस, कपलिंग लॉसेस, कॉपर लॉसेस, वाइंडिंग लॉसेस, फ्लक्स लॉसेस, ट्रांसफार्मर का मेनी लॉसेस रहता है। तो बिकॉज ऑफ दैट एफिशिएंसी इज नॉट 90%, देन पावर इन द सेकेंडरी should be 90%, means 90 by 100 into power in the primary. Okay, 0.911500 into 0.9. Power in the secondary is now 10350 watt. ये power in the secondary हो। नेक्स्ट इसका पावर डेलिवर्ड कितना है, आउटपुट 230 वोल्ट। देन पावर डेलिवर्ड इन द सेकेंडरी इक्वल टू करंट इन द सेकेंडरी, वोल्टेज इन द सेकेंडरी। करंट इन द सेकेंडरी इज वही कैलकुलेट करना है हमें। पावर इन द सेकेंडरी कितना है, 10350। करंट में सेकेंडरी अननोन, वही तो कैलकुलेट करना है हमें, द आउटपुट करंट। दिस इज कॉल्ड एज आउटपुट करंट। वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी इज 230 वोल्ट। Now 1035 divided by 23, so will become 45 ampere. Fine. So a second, इसी को हम आउटपुट करंट बोलते हैं। से लेकिन प्राइमरी ट्रांसफार्मर में इस सेक्शन को, सेकेंडरी सेक्शंस को हम आउटपुट बोलते हैं, प्राइमरी सेक्शंस को हम इनपुट बोलते हैं। प्लीज डू रिमेंबर, ये जो प्राइमरी सेक्शन है इसको हम इनपुट सेक्शन बोलते हैं, ये सेकेंडरी सेक्शन है इसको हम आउटपुट बोलते हैं। दिस विल बी सेकेंडरी, ये लेफ्ट साइड वाला प्राइमरी, इसको हम इनपुट सेक्शन बोलते हैं। हम सेकेंडरी सेक्शंस को आउटपुट बोलते हैं। यहाँ पे वेरी गुड क्वेश्चन इज देयर। AC voltage is applied to LCR circuit which drives a current of this much. The average power dissipated. Very simple, like यहाँ पे आप सर्क्यूट ड्रॉ करने का जरूरत भी नहीं है ना, ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल मैथमेटिकली। ये रजिस्टर हुआ, LCR सीरीज सर्क्यूट, यहाँ पे आपको इंडक्टर, कैपेसिटर, AC सोर्स, वोल्टेज अप्लाइड कितना
20 साइन 200 पाई टी हम अप्लाई कर रहे हैं। करंट कितना फ्लो फ्लो हो रहा है, आई। दिस इज आर एल सी। एवरेज पावर कौन डिसिपेट करता है यहाँ पे, पावर जो भी पावर डिसिपेट करता है वो रजिस्टर ही है। तो हमें यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर पता नहीं है। तो व्हाट आर द वेरियस फॉर्मूलाज, पावर डिसिपेटेड in the circuit is equal to average power dissipated IRMS square into R. Okay, fine. और VR square by R, और दूसरा फॉर्मूला है VRMS IRMS cos phi। VRMS बोले तो VM by root 2, IRMS means IM by root 2। और यहाँ पे व्हाट इज VM, VM कहाँ पे है, दिस इज VM, इसको ही हम VM बोलते हैं। And इसी को हम IM, because pronunciation will be, this will be I equal to IM sine omega phi। Symbols very important। So ये वाला हुआ ओमेगा, ये वाला फेज, इसको हम IM बोलते। ये वाला हुआ ओ VM, ए ओमेगा हुआ, एग्रीड। cos phi कितना, cos pi by 3। VM का वैल्यू कितना है 20 रूट 2, IM का वैल्यू 10 रूट 2, cos pi by 3, cos 60 1 by 2। तो 200 2 into 1 by 2। एवरेज पावर डिसिपेटेड, तो ये हुआ कितना 200 by 4, 50 वैट। ये सर्किट ड्रॉ करने का जरूरत नहीं एग्जाम में, फॉर्मूलास, थ्रू फॉर्मूलास ही इसको आप मैनेज करना चाहिए। और वीआरएमएस यहाँ पे इक्वेशन दे दी, यहां से आपको पता करना है ओमेगा सभी cos phi। Okay, fine. These are the some problems related to. Okay, what all we have discussed. This was a January shift, 2024. So once again, I'll request all students to read all the concepts. Okay, then next, revise all formulas. Then solve PYQ. This is a basic idea. यहाँ पे आपको AC में some terms are there like resistance, reactance, capacitive reactance, phase angle, power factor, average power dissipated, VRMS, impedance। इसके बारे में यू शुड हैव द क्लैरिटी। अगर आपको ये जो टर्म्स है यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, और ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम। अगर अगर ये टर्म्स आपको याद रहे तो इसका मीनिंग, इन डेप्थ मीनिंग, और कौन से इक्वेशन है, लाइक इम्पिडेंस एंड पावर फैक्टर कैसे रिलेशन है, VRMS and average power, how they are related, then average power and current, how they are related। अगर आपको इनके बारे में पता है बोले तो then you can manage। So from where do all will get these ideas, या पढ़ने पे you should read एक दो बार अगर चैप्टर पढ़े तो, then you'll get some basic idea what is the meaning of them, XL, XC, phase angle, power factor, average power, VRMS, impedance, resistance, लैग लीड, इसके बारे में आपको आइडिया रहता है। देन फॉर्मूला याद कर सकते तुम।
अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, फॉर्मूलास याद है, फिनिश, और अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन देखते ही मैं ये सब लिख रहा हूँ ना, दिस वॉज द मेथड। देयर नो अदर सिंपल थिंग। You have to read 2, 3 times, 4 times, 5 times. Take textbook or take teacher notes. Read it. When you read again and again, no, you'll get a better picture. Fine. So we'll take the next chapter, electromagnetic induction. Okay, till then, bye. Take care. So all the best. Prepare well for exams. Thank you all of you. Thanks for great support. कल मिलेंगे. Yeah. Bye. Good morning, kids. In today's class, we are going to discuss about the JEE Mains PYQ 2024 April shift. The chapter name is Alternating Current. Okay, this particular is a very simple chapter where some 7 or 8 formulas are there, and it will hardly takes for you 1 hour to revise this whole chapter. Then revise this, memorize the formulas, and solve at least 1 or 2 years PYQ. That'll be sufficient. Okay, fine. So we'll start with the first question. I have the, okay, let me read the question. A capacitor of reactance 4√3 ohm and a resistor of 4 ohm are connected in series with an AC source of peak value 8√2. The power dissipation in the circuit. Okay, I'll explain in Hindi also. बहुत सारे बच्चे सर हिंदी में भी पढ़ा हो, थोड़ा बहुत उनको इजी हो जाएगा बोल रहे थे। फिर सर, सो इसमें क्या है कि लाइक आपको ये आरसी सर्क्यूट है, लाइक तो फर्स्ट यहाँ पे हम कैपेसिटर सर्किट ड्रॉ करेंगे। दिस इज कैपेसिटर, दिस रजिस्टर, रजिस्टर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है। इसको हम सीरीज में अक्रॉस एसी सोर्स में कनेक्ट कर रहे हैं। सीरीज मींस करंट विल बी सेम करंट हैज टू फ्लो। देन दिस सच, इस ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज बोलते हैं। सर सीरीज बोले तो क्या है? करंट रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है ना, वही करंट यहाँ पे फ्लो होता है। मीन्स लाइक सर, व्हाट डू मीन बाय लाइक ए सीरीज? फिर थोड़ा कॉन्सेप्चुअली, यहाँ पे करंट का जितना भी मैग्नीट्यूड है, फेज एंगल है, उसी मैग्नीट्यूड उसी फेज एंगल अक्रॉस कैपेसिटर एंड रेजिस्टर में रहे तो देन रेजिस्टर एंड कैपेसिटर वी शुड कॉल देम एज सीरीज। ओके फाइन। इसका पीक वोल्टेज कितना है? Vm गिवन 8√2। इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस वैल्यू कितना दिया है? 4√3 ओम। और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना? 4 ओम। यहाँ पे हम इम्पिडेंस पहले फाइंड आउट करेंगे। इम्पिडेंस का सर्क्यूट, इम्पिडेंस ऑफ सर्क्यूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर विल बी 4 स्क्वायर ए 4√3 होल स्क्वायर, ये 16 होगा, 16 into 3, so this will be 16 plus 48 रूट 64, ए होगा आपका टोटल 8 ओम। ये तो इम्पिडेंस हो गया सर्क्यूट का। देन वी आर एम एस, वी एम, यहाँ पे पीक वोल्टेज कितना है? 8√2 वोल्ट है। वी आर एम एस वैल्यू, वी आर एम एस वैल्यू यहाँ पे हमको पीक बाय √2, वी आर एम एस इक्वल टू वी एम बाई √2। पीक वैल्यू कितना दिया है? 8√2, सो 8√2 बाई √2 विल बी 8 वोल्ट। ये होगा आपका वी आर एम एस। देन अगर आप ओम्स लॉ सर्क्यूट को लगाए तो यहाँ पे आपको वी आर एम एस विल बिकम इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड। वी आर एम एस कितना हुआ? 8। आई आर एम एस हमें पता नहीं, सो दैट वी आर कैलकुलेटिंग, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इम्पिडेंस, इम्पिडेंस इसका 8 हुआ, तो आई आर एम एस करंट कितना फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर। और यहाँ पे एसी सर्क्यूट में सो कौन सा वो एलिमेंट है जो पावर डिसिपेट करता है? यहाँ एक आपको रेजिस्टर मिल रहा है, दिख रहा है, और यहाँ पे आपको कैपेसिटर दिख रहा है।
इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो पावर डिसिपेट करता है, मीन्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके इट विल कन्वर्ट इनटू ईट। ये तो कैपेसिटर स्टोरिंग एलिमेंट हुआ। हम्म? ये तो डिसिपेशन, डिसिपेशन मीन्स कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल टू ईट। तो जो यहाँ पे हमारा सर्किट में जो जो सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स से लेके उसको ईट में कन्वर्ट है, उसको हम डिसिपेटिव एलिमेंट बोलते हैं। और जो एनर्जी यहाँ से लेके दोबारा फिर सोर्स को देते हैं, उसको हम स्टोरिंग एलिमेंट बोलते हैं then। तो यहाँ पे आपको कैपेसिटर एंड इंडक्टर, तो जो भी यहाँ पे डिसिपेट करता है वो ओनली रेजिस्टर, सो विल राइट वन ओनली रेजिस्टर dissipates power। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? पावर डिसिपेशन, एवरेज पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन बोल रहे हैं, जब भी आपको पावर डिसिपेशन बोल रहे हैं तो इट्स एवरेज ओनली, इसी में इट्स ए डिफॉल्ट। एवरेज पावर डिसिपेटेड इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। और सर बाकी कुछ एनी अदर फॉर्मूलास आर देयर? यस, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाइव। अगर आपको वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव पता है तो यूज दिस फॉर्मूला। अगर आपको RMS into R पता है, use this particular formula. Or if you are having VRMS square by R, use this formula. ये जो different formulas है, everything will be same। अगर आपको VRMS and R पता है, use this formula. अगर आपको VRMS, IRMS, cos phi पता है, use this formula. अगर आपको IRMS and R पता है, use this formula. तो we know IRMS. Then what is the power dissipation? Power dissipation यहाँ पे 1 into 4 will be 4 watt. Okay, sir, like a VRMS, क्या हम यहाँ पे VRMS पता है, ऐसा लगे VRMS कितने 8 वोल्ट है, तो इसको लगाओ यहाँ पे 8 स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस कितना 4। ओके ओके, दिस VRMS स्क्वायर बाय आर, नो दिस इज VR, सॉरी, यहाँ पे आपको VR स्क्वायर बाय आर। सो यहाँ पे आपको ड्रॉप फाइंड आउट करना पड़ता है। इसका ड्रॉप अगर पता है तो सब्स्टिट्यूट विल गेट द सेम आंसर। अगर कॉस फाइव पावर फैक्टर के बारे में अगर कुछ इंफॉर्मेशन तो यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। So all these things, formulas are useful to calculate the power dissipation based on the information available। Fine, so your answer will be, यहाँ पे हमारा आंसर कितना होगा? 4 होगा। Okay, fine। So we'll take the next problem। नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि alternating current EMF 110√2 sin 100 volt is applied to a capacitor, the RMS value of current। So I think it's like a यहाँ पे प्रॉब्लम प्योर like a capacitor connected across pure AC signal। This is the capacitor। इसका XC वैल्यू पता नहीं, we have to calculate। और यहाँ पे आपको AC सोर्स है, इसका ये तो पीक वैल्यू है एंड ये तो ओमेगा है। तो इसका VRMS कितना निकलेगा? VRMS इज इक्वल टू 100√2/√2। इसका तो RMS वैल्यू हो गया 100 वोल्ट। ओमेगा वैल्यू कितना है? 100 रेडियंस पर सेकेंड। तो इसका XC वैल्यू, कैपेसिटेंस C वैल्यू कितना दिया है? 2 माइक्रोफैरेड। RMS वैल्यू करंट कितना? IRMS करंट फ्लो हो रहा है। देन इफ यू अप्लाई द ओम्स लॉ across the capacitor, it should be VC equal to IRMS into XC। और दिस
ये दोनों पैरेलल में है। तो सीधा जितना भी ड्रॉप कैपेसिटर के पास है वही ड्रॉप अक्रॉस एसी सोर्स में है। दिस टू आर पैरेलल, लाइक वी कैन से दिस टू आर पैरेलल। ओके, नो दिस शुड बी इक्वल टू यहाँ पे हम वैल्यू लगा देंगे वी आर एम एस वी सी इक्वल टू वी आर एम एस। अलग से लिख देता हूँ। So this should be equal to 100 IRMS वैल्यू अननोन थिंग वही कैलकुलेट करना है हमें, और एक्सी वैल्यू पता नहीं। सो दिस शुड बी इक्वल टू ओमेगा सी। ओमेगा वैल्यू यहाँ पे आपको 100 और कैपेसिटेंस का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6। सो IRMS वैल्यू होगा आपका इतना 2 इंटू 10⁻⁴। सो 2 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर, और इसका 20 मिली एम्पियर कर देंगे। सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैं 110 है, 100 ले चुका हूँ। तो दिस ये तो 110 हो गया, दिस भी 110। यहाँ पे आपको 110 110 ये हो गया। लेट मी फिर एक बार कैलकुलेट कर लेंगे। दिस विल बी 22 इंटू 10⁻³ एम्पियर और 22 मिली एम्पियर। ओके सर, ये लाइक व्हाट डू मीन बाय ये रिएक्टेंस बोले तो क्या है? What actually happens in the reactance? ये क्या है कि it will make current to lead the voltage across capacitor। करंट को वोल्टेज से 90 डिग्री आगे बढ़ाता है। इट विल एड फेज, इट विल मेक द करंट टू लीड द वोल्टेज। ओके सर, लीड बोले तो इसे क्या, इसका क्या मतलब है? मीन्स अगर आप साइनोसोडियल वोल्टेज कर्व इफ ड्रॉ कर लिए तो आईआरएमएस का कितना, इट लीड्स बाय 90 डिग्री। सो ये हो गया आपका करंट, और दिस वन ये हो गया आपका वोल्टेज। ओके फाइन, दिस इज द टाइम। जब करंट मैक्सिमम है तब वोल्टेज मिनिमम रहेगा, और जब करंट मिनिमम है तब वोल्टेज मैक्सिमम रहेगा। दिस व्हाट द मीनिंग ऑफ रिएक्टेंस। सो इन कैपेसिटिव रिएक्टेंस current will lead the voltage. XC will make IC to lead VC by 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है बोले तो, लाइक जब करंट मैक्सिमम है तब वोल्टेज जीरो रहेगा, जब करंट डिक्रीज होते रहता हो रहा है तब तब वोल्टेज इंक्रीज होते रहता है। दैट हैपेंस अक्रॉस कैपेसिटर। और जब वोल्टेज मैक्सिमम है करंट जीरो रहेगा। सर हाउ इट इज पॉसिबल सर, वोल्टेज जीरो करंट, दिस इज at any instant of time when the current is decreasing the voltage will be increasing. This particular condition is what we say current leads the voltage by 90 degree across the capacitor, and this is what the reactance will do. Are you getting now? And it will not dissipate power. Capacitor, very clearly we'll write it here. Capacitor will not dissipate power. मीनिंग बल्कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कैपेसिटर है ना, सो इट विल टेक एनर्जी फ्रॉम द सोर्स और रिटर्न कर देता है। दिस व्हाट मींस, व्हाट इज द कैपेसिटर? इट विल स्टोरिंग एलिमेंट। कैपेसिटर क्या करता है कि जस्ट स्टोर एलिमेंट। ओके सर, लाइक ये ले रहा है और फिर बाकी रिटर्न दे रहा है, इससे इससे क्या यूज है यहाँ पे? आप यहाँ देख रहे हैं तो it will make the current to lead the voltage, and I can by varying this frequency मैं यहाँ इसका एक करंट है ना, इसका वैल्यू भी कंट्रोल कर सकते हैं हम।
दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको यहाँ पे हम अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करें तो वी कैन कंट्रोल दिस आईआरएमएस, और बाय चेंजिंग द कैपेसिटेंस वी कैन कंट्रोल द आईआरएमएस. मीन्स यहाँ पे हमको करंट कंट्रोल करने का वी हैव बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे. एक, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स वेरी करने से यहाँ पे करंट इन सर्किट में चेंज हो रहा है, और कैपेसिटेंस चेंज करने पे यहाँ पे करंट चेंज हो रहा है. एंड वन मोर थिंग इज लाइक करंट एंड वोल्टेज का एक रिलेशनशिप भी हम बना रहे हैं, like a current leads the voltage. So all these things are available with the capacitor. Okay, fine. So we'll take the next problem. A coil of negligible resistance is connected in series with 90 ohm resistor across 120 ohm, 60 ohm supply. A voltmeter reads 36 volt across resistance. Inductance of the coil. So what is this problem? AC supply. So ये तो सर्किट हो गया आपका RL सर्किट. यहाँ पे हम इंडक्टर लगाएंगे एक इन सीरीज. यहाँ पे आपको रजिस्टर है कनेक्टेड अक्रॉस एसी सोर्स. इसका वोल्टेज कितना ड्रॉप है? 120 वोल्ट आरएमएस वैल्यू, और 60 इयर्स सप्लाई वोल्टेज. ये तो वीआरएमएस हुआ, और ये तो फ्रीक्वेंसी दे दिए है. ये वोल्टमीटर रीड्स 36 वोल्ट अक्रॉस द रजिस्टर. अगर यहाँ पे आप वोल्टमीटर कनेक्ट करें तो वोल्टमीटर कितना रीड कर रहा है? 36 वोल्ट. एंड दे आर सीरीज. अगर सीरीज में क्या क्या होता है? सीरीज करंट विल बी सेम. सो यहाँ पे फेजर डायग्राम डाल देंगे. अक्रॉस द इंडक्टर करंट लैग्स द वोल्टेज. अक्रॉस द रजिस्टर करंट एंड वोल्टेज दोनों इन फेज में रहते हैं. वी आर एंड दिस इज वीआरएमएस और ए आईआरएमएस. अगेन वंस अगेन सीरीज बोले तो क्या है? सेलेक्टेड करंट का मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल अक्रॉस रजिस्टर में और इंडक्टर में सेम रहता है. then such a combination what we'll call they're in series. Inductance of the coil. So हमको क्या पूछ रहा है कि लगे इसका L वैल्यू कितना है? तो पहले हम क्या करेंगे, लगे इसका VL लगा देंगे, और इसको VR बोलते हैं. फेजर डायग्राम डाल देंगे. सो ए हुआ IRMS, इसका जीरो फेज है. VL और ए VR एंड दिस इज VRMS. अगर वोल्टेज, जब वोल्टेज ट्रायंगल इसका कंप्लीट कर देंगे, so this will be VR, AVL, and this is VRMS. This will be phase angle. So one simple AC circuit, वोल्टेजेस का वेक्टर सम ऑफ वोल्टेजेस हम करते हैं. डीसी में क्या है कि अलजेब्रिक सम. The drop across this resistor equal to applied voltage by the source. यहाँ पे क्या है कि एसी सोर्स में द अप्लाइड वोल्टेज वेक्टर सम ऑफ वोल्टेजेस करते हैं हम, बिकॉज यहाँ के हम वोल्टेज को एक वेक्टर जैसे ट्रीट करते हैं. इन एसी सर्क्यूट, इन सीरीज एसी सर्क्यूट, we'll write down like this. In series AC circuit, voltages are treated as a vector. वेक्टर मानी फेजर बोल दीजिए. टेक्निकल इसको हम फेजर बोलते हैं. फेजर बोले तो भी ज्यादातर लोगों को कंफ्यूज हो जाता है. वेक्टर बोले तो हाँ सर, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, इस वोल्टेज अगर आप तुम ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर ले लो, इसका मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन 90 डिग्री है. अगर आप करंट ले लो, इसका मैग्नीट्यूड है 0 डिग्री एंगल है. अगर आप अप्लाइड वोल्टेज ले लो,
इसका मैग्नीट्यूड है और इसका सम फेज एंगल भी है। अगर ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर ले लो, इसका एक मैग्नीट्यूड है, जीरो फेज एंगल है। तो इस तरह से क्या हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि लेके एसी सर्क्यूट में ट्रीट वोल्टेजेस एज वेक्टर्स, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी रहता है। फाइन। तो विल यहाँ पे हम वेक्टर सम ऑफ वोल्टेजेस कर लेंगे। वी आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू वी आर एम एस स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर इक्वल टेन स्क्वायर। वी आर एस में कितना दिया है? 120 वोल्ट, 120 स्क्वायर। वी आर का कितना ड्रॉप है? 36, 36 स्क्वायर वी एल स्क्वायर 120। लेट मी कैलकुलेट। 120 स्क्वायर 1400, 36 स्क्वायर का 36 स्क्वायर तो 1296, 144000 माइनस 1296, 13104। इसका रूट ले लेंगे। रूट ऑफ 13104 करीब करीब अराउंड 114.47 और 5 कर देंगे इसको। इसका वोल्टेज हो गया। देन across the resistor will apply the ओम्स लॉ लगा देंगे। वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस। वी आर एस कितना? 36। आई आर एम एस वैल्यू पता नहीं है। आर का वैल्यू कितना? 36। सो आई आर एम एस कितना हुआ ना? 1 एम्पियर। अक्रॉस इंडक्टर ओम्स लॉ लगा देंगे। सो यहाँ पे वी एल इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्सएल। एक्सएल मीन्स ओमेगा एल। ये तो ओम्स लॉ अक्रॉस इंडक्टर हुआ। सो वीएल का वैल्यू कितना? 14.5 और आईआरएमएस का वैल्यू 1। ओमेगा ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एफ इंटू एल। 114.5 2 इंटू 3.14 इंटू एल। इसका 114,114.5 6.114.5 डिवाइड बाई 6.28 18.23 आ रहा है। 90 ohm resistance, 90 ohm resistance। ओके ओके, थोड़ा थोड़ा लाइक आई थिंक रॉन्ग वैल्यू ले चुका हूं मैं। 90 आईआरएमएस का कितना हुआ? 36/90, 6/50 ना। सिक्स डिवाइड बाई 15, 0.4। इसका वैल्यू 0.4 हो। ओके सर, सम कैलकुलेशन मिस्टेक। दिस इज 0.4। 2 पाई एफ का वैल्यू कितना है? एफ का 60 है। I'll substitute here 114.5, IRMS वैल्यू 0.4, 2 3.14, फ्रीक्वेंसी कितना है? 60 इंटू एन। दिस सो कैलकुलेट करने के बाद 0.67 एमपी। तो यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। आरएल सर्क्यूट, सर आरएल सर्क्यूट इसका दूसरा एक नाम भी दे चुके हैं हम। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैग सर्क्यूट। यहाँ पे आपको अप्लाइड वोल्टेज
The current, applied current lags the applied voltage. Ohm's law across resistor, VR equal to IRMS into R. Ohm's law across inductor, VL equal to IRMS into XL. Across inductor, current lags the voltage. Across resistor, current and voltage in phase. And vector sum of voltages. Complete आपको RL सर्किट मैं रिवाइज कर रहा हूँ. Okay, fine. And vector sum of voltages यहाँ पे हम लेते हैं. In AC series AC circuit, voltages must be treated like a vector. तो एक वोल्टेज को आप एक वेक्टर तरह मान लीजिए. वोल्टेज का एक मैग्नीट्यूड रहता है और एक डायरेक्शन. वोल्टेज का एक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. वोल्टेज यहाँ पे लुक एट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर. इसका मैग्नीट्यूड कितना है? VR है. फेज एंगल कितना? 0. वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, इसका मैग्नीट्यूड VL है 114.4 और इसका एंगल कितना है? फेज एंगल 90 डिग्री. अप्लाइड वोल्टेज का इसका मैग्नीट्यूड VRMS 120 वोल्ट. इसका फेज एंगल कितना है? 5. तो यहाँ पे वी आर ट्रीटिंग वोल्टेजेस एज लाइक अ वेक्टर्स. ओके फाइन. सो दिस विल बी आवर आंसर. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. An LCR circuit is at resonance for a capacitor C inductor. Now the value of resistance is all keeping all other parameters. The current amplitude at resonance will be now directly AC circuit, inductor, capacitor, or a resistor. This is the AC source. R, C, L. करंट यहाँ पे सेम रहेगा. The current amplitude at resonance. At resonance, the drop across inductor capacitor will be equal. जो भी यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, that will be due to applied voltage VRMS and resistance. यहाँ पे XL will become equal to XC. VL minus VC will be 0. Okay, I'll write the equation. यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे. VL will be IRMS. IRMS VC. यहाँ पे आपको VR and IRMS. ये तो फेजर डायग्राम हो. अक्रॉस इंडक्टर voltage leads current, voltage lags current, and voltage and current are in phase across resistor. Okay, once again, basic concept resonance का. Across inductor, voltage leads current. Across capacitor, voltage lags current. Across resistor, current and voltage are in phase. ये सभी हम फेजर डायग्राम में डाल देंगे. So this will be VL. इसका मैग्नीट्यूड VL है, फेज एंगल 90 डिग्री. VR इसका मैग्नीट्यूड VR है, फेज एंगल 0. VC इसका मैग्नीट्यूड VC है, फेज एंगल -90. अप्लाइड वोल्टेज करीब करीब VRMS, लेट इट भी यहाँ पे ले लेंगे. एंड IRMS मैग्नीट्यूड IRMS, इसका फेज एंगल 0 है. तो यहाँ पे हम जब वोल्टेज ट्रायंगल कंप्लीट कर लेंगे, दिस विल बी VR. ये तो आपको VL VRMS. So we'll apply the VRMS square equal to VR square plus VL minus VC whole square. Ohm's law across the circuit. Current amplitude at resonance voltage. At resonance, what will happen? XL is equal to XC. IRMS into Z. Ohm's law for the circuit. Ohm's law for resistor. IRMS into R. Ohm's law across the inductor. IRMS into XL. IRMS into XC. IRMS will get cancelled out. Z square equal to R XL minus XC. At resonance condition, at resonance XL and XC इन दोनों का impedance equal रहेगा. So therefore at resonance value कितना रहेगा now? Z equal to R. Okay, fine. So यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रहा है
ये रजिस्टर के वजह से ही फ्लो होता है. एग्रीड. तो देन विल अप्लाई द आईआरएमएस. आईआरएमएस वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. आईआरएमएस इक्वल टू वीआरएमएस बाई आर. यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है? करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस. वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इसका हम आधा, जब रेजिस्टेंस का वैल्यू R/2 होगा तब करंट का वैल्यू कितना होगा? तो ये वीआरएमएस R/2 न्यू करंट का वैल्यू पूछ रहे हैं. इसका एम्पलीट्यूड कितना हुआ? एम्पलीट्यूड मीन्स इज आस्किंग द पीक वैल्यू. पीक वैल्यू मीन्स Im/√2 2 इंटू इसका Im/√2. सो इसका पीक वैल्यू एम्पलीट्यूड कितना हुआ? ये तो डबल हो गया. इट बिकम डबल. ओके फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे. For a given series LCR circuit, it is found that maximum current is drawn when the value of variable capacitance is 25 nanofarad. If resistance is 200 is being used in a given circuit, the frequency of AC source. Series LCR circuit, maximum current is drawn. When current will be maximum? At resonance. Directly resonance का circuit ले लो. Inductor, capacitor, and this is resistor. यहाँ पे conditions क्या दे रहे हैं कि लगे करंट यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है, this will be maximum. At maximum, what is the condition? XL equal to XC. At resonance, there is a condition. And this will be the current. Resonance frequency. This will be the maximum current. At resonance, this current versus frequency graph इस तरह vary हो रहा है. That one. As frequency increases, current through the circuit will increase. At resonance frequency, current जो flow हो रहा है उसका maximum value रहता है. Maximum value हो जाता है. then current will become maximum. अगर further आप frequency increase करेंगे source का, तो frequency of किसका increase करेंगे? source का. then further increase करेंगे, current का value decrease हो जाता है. no, the frequency of AC source. यहाँ पे हमको 100 milliampere, this one. So any formula for resonant frequency? F naught equal to 1/2 pi under root of LC. This what resonant frequency है. This resonance frequency का value पूछ रहे हैं. 1/2 pi root of L value. L value कितना है? 100 into 10 to power of -3. Capacitance का value 25 into 10 to power of -9. Simplify कर दो. The frequency of AC source. So this should be equal to, simplify कर देंगे. यहाँ से आपको 10 बार निकलेगा. 100 का रूट 10 है, 25 का रूट 5 है, 10 to power of -12. This will be 10 to power of -6. 10 to power of 5, 10 to power of 5, 2 pi into 5. 2 into 5, 8, 10 होगा. So 10 to power of 4 by pi. 10,000 by 3.14. 10 to power of 3 में एक्सप्रेस करना है. 10 into, okay, इसका वैल्यू पाई रख देंगे. Will be better. Okay, fine. This will be 10 into 10 to power of 3. This is pi. So pi square का वैल्यू विल भी कितना होगा आपको? 10.
द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स पूछ रहे हैं। 100 मिली हेनरी है, 25 10 to power of 4, 10 into 10 to power of 3, पाई का वैल्यू 3.3। या ओके फाइन, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो। Just at resonance, what is the resonance frequency formula? This is the formula. Next question ले लेंगे। When a DC voltage 100 is applied across inductor, current 5 ampere flows to it. When an AC voltage is connected to inductor, its inductive reactance is to be the power dissipated in the circuit पूछ रहे हैं। कौन सा भी इंडक्टर ले लो, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R रहेगा। तो रेजिस्टेंस क्यों है? बिकॉज इंडक्टर का कैसे बने थे हम, एक मेटल वायर ले लो, मेटल वायर लेके आपके अंगूठे ऊपर आप घुमा दो उसको, देन वही मेटल वायर इट विल बिकम एन इंडक्टर। और कौन सा भी इंडक्टर रहने दो, एक मेटल वायर से बनता है ना, तो हर एक मेटल वायर चीज का, हर एक मेटल का एक रेजिस्टेंस रहता है, तो दैट विल बिकम रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। तो पहले क्या है कि इसको हम डीसी सोर्स कनेक्ट करेंगे, 100 वोल्ट डीसी कनेक्ट करें, कितना 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, इससे क्या हमको रेजिस्टेंस मिलेगा, 100 इज इक्वल टू 5 इंटू R equal to 20 ohm. This is the internal resistance of inductor. Okay, fine. तो इसी सर्क्यूट को, इसी इंडक्टर को एसी सोर्स को लगा देंगे, एसी सोर्स कनेक्ट कर देंगे। 2 वोल्ट पीक वैल्यू, 200 वोल्ट पीक वैल्यू मींस 200 बाय रूट 2, इसका पीक वैल्यू कितना है, 200 वोल्ट है, तो इसका आरएमएस कितना होगा, आरएमएस विल बिकम वीएम बाय रूट 2, 2n by root 2. Its inductive reactance is found to be, इसका एक्सेल वैल्यू दे दिए है, कितना एक्सेल वैल्यू, एक्सेल वैल्यू इज 20 रूट 3। देन पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट पूछ रहे हैं। यहाँ पे आप कौन कौन डिसिपेट पावर करता है, जो रेजिस्टेंस इंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो डिसिपेट पावर करता है। फाइन, सो वी इसका हम रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है हमें कितना है, लगे 20 ओम। नो, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट पूछ रहे हैं, तो इसके, लेकिन इसके लिए हमें आरएमएस चाहिए। आरएमएस के लिए तो वी नो वी आर एम एस, हमें एक्सेल पता है, हमें आर भी पता है, तो इसका हम इम्पिडेंस फाइंड आउट करेंगे पहले। इम्पिडेंस इज इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्सएल का वैल्यू कितना है, 20 रूट 3 होल स्क्वायर, और रेजिस्टेंस का वैल्यू 20 स्क्वायर। 20 तो बाहर आ गया, 20 स्क्वायर, ये तो 3 प्लस 1 4, और दिस विल बिकम 20 इंटू 2 40 ओम। आरएमएस वैल्यू कितना लगाए हम, 200 रूट 2, तो यहाँ पे हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे फॉर सर्क्यूट, वीआरएमएस इंटू आरएमएस इंटू जेड, जेड मीन्स इम्पिडेंस। वीआरएमएस का वैल्यू कितना है, 200 रूट 2, आरएमएस वैल्यू, इम्पिडेंस कितना है 48, 0, सो आरएमएस का वैल्यू होगा, ये हो गया कितना, 50 बाई रूट 2, 50 बाई रूट 2 और 25 रूट 2 एम्पियर। यहाँ पे हम क्या पूछे, पावर डिसिपेटेड इन द सर्क्यूट। पावर डिसिपेट, कौन डिसिपेट पावर करता है, ओनली दिस रजिस्टर ओनली।
So then power dissipated in the circuit should be equal to IRMS स्क्वायर इंटू आर. IRMS का वैल्यू कितना है 25√2 होल स्क्वायर. आर का वैल्यू कितना है 28. So 625 into 2 into 20. IRMS value of 5 by root 2. एक जीरो कैंसिल हुआ यहाँ पे, या 5 by root 2. इसका तो 5 by root 2 है, तो इसका 5 by root 2 कितना हुआ कैलकुलेशन देखेंगे. 25 by 2 into 20, 250 watt. ओके सर, लाइक cos 5 पावर फैक्टर, इसका दूसरा कौन सा फॉर्मूला है? VRMS IRMS cos 5. ये भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं. cos 5 बोले तो पावर फैक्टर. मेनी अप्रोचेस, वही फॉर्मूलास जो 7-8 फॉर्मूलास है, वही फॉर्मूलास हम यहाँ पे लगा रहे हैं. एवरेज पावर डिसिपेटेड IRMS स्क्वायर. अगर आपको यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप पता है, यू कैन ऑल्सो राइट VRMS स्क्वायर बाय, लाइक प्रीवियस प्रॉब्लम हम करे थे ना, वही मेथड वैसे भी कर सकते हैं हम. पर सर एग्जाम में इतना सब कुछ डिटेल में, नो नो, यू हैव टू डू कैलकुलेशन, हाई स्पीड कैलकुलेशन. इंपिडेंस कैलकुलेट करो, इंपिडेंस से करंट कैलकुलेट करो, करंट से दिस वन, और से लेके व्हाट इज द प्रॉब्लम इज, अगर ये फॉर्मूला ले रहे अगेन अगेन आपको पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है. व्हाट इज द पावर फैक्टर? पावर फैक्टर विल बी R by Z. पावर फैक्टर सर, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर फैक्टर? इसका तो R by Z है. अगेन वन मोर कैलकुलेशन हो गया ना, सो इट इज बेटर टू यूज दिस फॉर्मूला. तो विल डिसिपेट पावर, यहाँ पे पावर कौन डिसिपेट करता है? ओनली इंडक्टर, ओनली रेजिस्टर. ये रेजिस्टर कहाँ से आया? जो इंडक्टर हम बनाते हैं एक मेटल वायर से बनाते हैं. सो जो मेटल वायर का वो रेजिस्टेंस है, वही इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर हो गया यहाँ पे. अगेन वंस अगेन, इंडक्टर ऐसा एलिमेंट है जो पावर डिसिपेट नहीं कर सकता है. कौन करता है यहाँ पे पावर डिसिपेशन? ओनली रेजिस्टर. इंडक्टर, व्हाट इज द रोल ऑफ इंडक्टर सर? लाइक इट विल ओनली कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट. इट इज अ स्टोरिंग एलिमेंट. या रेजिस्टर which will dissipate the power. Now we'll take the next problem. Okay, please like, share, and subscribe our channel. Okay, we'll take the next question. We have two statements. In LCR series circuit, current is maximum at resonance. I think A to ठीक है ना? So this will be inductor, capacitor, a resistor. ये जो है, this is AC source. ग्राफ, इसका ग्राफ करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ. एट रेजोनेंस इसका करंट मैक्सिमम है. ओके फाइन. कौन सा करंट? आइदर पीक करंट और आरएमएस करंट. Current in a purely resistive circuit can never be less than that in a series LCR circuit when connected to same voltage source. Can never be less than. What is the meaning of purely resistive circuit? Means दूसरा सर्किट डाल देंगे यहाँ पे, रेजिस्टर और एसी सोर्स है, प्योर एसी सोर्स, सेम सोर्स पे हम कनेक्ट कर रहे हैं. देन व्हाट इज द करंट? यहाँ पे जो करंट फ्लो है वो आईआरएमएस. इसका आईआरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. दिस आईआरएमएस इज इक्वल टू वीआरएमएस बाय आर. इस प्योर रेजिस्टिव सर्किट में भी ये जो करंट फ्लो हो रहा है, दिस आल्सो इक्वल टू वीआरएमएस बाय आर. ये दोनों इक्वेशंस कंपेयर कर लो ना. When connected to same voltage source,
तो बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट है ना. Current in purely resistor can never be less than that in a LCR circuit when connected to same voltage source. So we'll take this statement. ये LCR series circuit है, ये pure resistive circuit है. At resonance XL equal to SC, जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस एंड अप्लाइड वोल्टेज ओनली. ये प्योर रेजिस्टिव सर्क्यूट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस. आई थिंक बोथ इक्वेशंस आर सेम, so therefore both statements are correct. We'll take the next question. An LCR series circuit is subject to an AC signal of 200 volt 50 Hz. If the voltage across the inductor is then the current in the circuit. LCR circuit. So definitely तीनों एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, इंडक्टर, कैपेसिटर और ए रजिस्टर. तीनों यहाँ पे हम सीरीज में लगा देंगे अक्रॉस एसी सोर्स. एसी सोर्स का आरएमएस वैल्यू 250 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 50 हर्ट्ज. द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर का वैल्यू कितना है 10 मिली एम्पीयर. यहाँ पे वोल्टेज हमें दे चुके हैं, यहाँ पे दे दिया है 31.4 वोल्ट. हाँ, क्या पूछ रहे हैं, करंट कितना फ्लो हो रहा है. सर यहाँ पे रेजोनेंस नहीं, डायरेक्टली व्हाट इज आंसर. यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आरएमएस करंट कितना फ्लो हो रहा है अक्रॉस. कैपेसिटर्स का वोल्टेज पता है हमें, पता नहीं. ड्रॉप अक्रॉस पता है, अक्रॉस रेजिस्टर पता नहीं. हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि 200 वोल्ट, यहाँ पे 31.4 वोल्ट एंड इसका 10 मिली हेनरी एंड एक फ्रीक्वेंसी दे चुके हैं. ओम्स लॉ अक्रॉस ईच एलिमेंट यहाँ पे लगा देंगे हम. अक्रॉस इंडक्टर ओम्स लॉ, आईआरएमएस एक्सी. वीएल का वैल्यू कितना है 31.4. आईआरएमएस वैल्यू ये अननोन है, इसको फाइंड आउट करना है. एक्सेल वैल्यू कितना है ओमेगा एल 31.4. आईआरएमएस ए जो अननोन है ओमेगा, इसको हम क्या करते हैं 2 पाई एफ एल. 2 इंटू 3.14. एल का वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁻3. सॉल्व इट. 31.4 31.4. Okay, we'll get it. 2 pi FL, that one. So it's asking current in the circuit. Current कितना flow है? So this will be 10 milliampere. Omega LL value 31.4. 31.4 10 ये कैंसिल हो जाएगा. IRMS का वैल्यू कितना हुआ नो 10⁻³ 1000 बाई, थोड़ा गड़बड़ है, दे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर. वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का कितना वैल्यू है 31.4. अक्रॉस इंडक्टर ओमेगा वैल्यू नहीं दे चुके हैं यहाँ पे आपको 50 फ्रीक्वेंसी. सो 10⁻³ बाई 2 5 10, यहाँ पे आपको 100 10 एम्पियर या 50. सर वोल्टेज सर ऐसे थोड़ा कैपेसिटर के बारे में बोलूं. ओके, अक्रॉस ओम से अक्रॉस कैपेसिटर विल बी आईआरएमएस इनटू एक्सी एंड एक्सी वैल्यू क्या है, एक्सी वैल्यू इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी. वोल्टेज ओम्स लॉ अक्रॉस रेजिस्टर वीआरएमएस इक्वल टू आईआरएमएस इनटू आर. ओम्स लॉ फॉर द टोटल सर्क्यूट वीआरएमएस इक्वल टू आईआरएमएस इनटू जेड. एंड व्हाट इज जेड, जेड इंपेडेंस हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर. फाइन. एक बार रिवाइज करो एसी वेरी वेरी इजी है.
जस्ट एक बार एक 2 घंटे पढ़ लो तुम बस, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, बाद में फॉर्मुलास, देन प्रॉब्लम सॉल्व करो, ओके फाइन गुड, कोई सा भी प्रॉब्लम ले लो, यू कैन मैनेज। वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। An AC source is connected in given RLC. Okay, circuit दे चुके हैं। The RMS potential difference across the capacitor is asking to calculate the RMS value across the capacitor. इसका यहाँ पे हम VC वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, यहाँ पे हो गया VR, इसका ड्रॉप हुआ VL, ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर वी हैव टू फाइंड आउट। पीक वैल्यू दे चुके हैं, ओमेगा वैल्यू, सो इसका VRMS ले लेंगे 50√2/√2 50 वोल्ट। ओमेगा वैल्यू कितना हुआ 100। ओके फाइन, इसका XC वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। XC वैल्यू 1/ωc 100, C का वैल्यू 20 into 10 to the power of -6, this will be 10 to the power of 6 by 2 into 10 to the power of 3, 1000 by 2, 500 ohm। The potential difference across the capacitor, इसके लिए हमें क्या चाहिए, लाइक IRMS चाहिए। IRMS कैसे कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बोले तो विल गो फॉर इम्पीडेंस, R² plus XL minus XC whole square। मिनी मेथड्स आर देयर, R² का 300 स्क्वायर, XL वैल्यू इसका कितना, ओमेगा वैल्यू, ओमेगा इंटू एल वैल्यू 100, XC का वैल्यू कितना है 500। यहाँ पे हम फाइंड आउट कर चुके ना XC का वैल्यू, तो उसको भी लगा देंगे। दिस विल बिकम 300 स्क्वायर 400 स्क्वायर, यहाँ पे तो आपको 50 ओम। यहाँ पे आपके तो 100 कॉमन, 100 का रूट 110, 10 बाकी 3 स्क्वायर और 16 स्क्वायर 9 16, कितना रूट 25 हो चुका है, सो दिस विल बिकम 10√25, दिस विल बिकम 50 ओम। तो इम्पीडेंस, सर्किट का इम्पीडेंस कितना है 50 ओम। नाउ यहाँ पे हम IRMS कैलकुलेट करेंगे। IRMS इक्वल टू VRMS बाई Z। VRMS का कितना 50, Z is 50, IRMS कितना 1 एम्पियर, 1 एम्पियर IRMS करंट फ्लो हो रहा है। Then we'll apply the Ohm's law across capacitor, VC is equal to IRMS into XC। IRMS का कितना 1, XC का वैल्यू 500 या 50, 20 माइक्रोफैरेड। XC का वैल्यू 500 है। IRMS वैल्यू, VRMS कितना 50 दैट वैल्यू कितना, इम्पीडेंस का वैल्यू एक बार लेट मी एक बार चेक कर लेंगे। XL इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा वैल्यू कितना 100 400 यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, देखेंगे। यहाँ पे तो आपको 100 बार आ रहा है, 100 बार आता है यहाँ पे। 100 यहाँ पे आपको 500, सो इसका कितना हुआ 0.1 हुआ, 0.1, इतना भी बहुत ओके। 0.1 into 500 will be 50 volt। Similarly, voltage drop across inductor, IRMS XL
0.1 इंटू ओमेगा ओमेगा एल आपको फाइंड आउट करना है. ओमेगा एल कितना 100 10 वोल्ट. ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर IRMS into R 0.1 into 300 volt. Okay then. Huh? So yeah. So these are the some simple questions what they asked in the JEE Mains April shift. What are the questions? Like I will. Choose the यहाँ पे match list 1 list 2. Choose the correct of answer from the following given options. यहाँ पे match list 1 we have to match with the list 2. ओके फर्स्ट यहाँ पे जनरेट करेंगे, बाद में किक चेक कर लेंगे. अक्रॉस कैपेसिटर सर्क्यूट करंट लीड्स द वोल्टेज. फाइन. Across capacitor circuit current leads the voltage, so A will be 1. Across purely inductive circuit current lags the voltage, B का हुआ 4. phasor diagram pure inductive LCR series circuit at resonance voltage and current will be in phase. LCR series circuit voltage can lead current, and at resonance this can happen. At resonance is telling at resonance only voltage and current will be in phase. And in general LCR series circuit voltage can lead the current or voltage can lag the current, so we can go for D as option 3. Okay, fine. यहाँ पे key matching है. So he's asking phasor diagram across. So this little bit confusion sir, like यहाँ पे आप sir like how you justify sir like AB series circuit है, AB series circuit at resonance पूछा है. At resonance voltage and current will be in phase. In LCR series circuit not at resonance, it's not at resonance. तो कंडीशन कुछ रेजोनेंस के बारे में कुछ भी नहीं बोला है ना. सो देन वोल्टेज कैन लीड द करंट और वोल्टेज कैन लैग द करंट. सो दिस ऑप्शन वी कैन पिक अप. One more last question. So this all we are discussing the phase shift. Please like, share, subscribe our channel. You know the alternating current at any instant is given by the RMS value of this current. This is the DC voltage and this is the AC voltage. We have to calculate the effective value of this. This will be, अगर आपको फॉर्मूला पता है डायरेक्टली यू हैव टू सॉल्व यूजिंग द फॉर्मूला. अगर फॉर्मूला पता नहीं रहे तो देन यू हैव टू सॉल्व बाय दिस मेथड. इज आस्किंग टू गेट द RMS वैल्यू ऑफ दिस. IRMS स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर dt by इंटीग्रल dt 0 to t. Rate t equal to 2 pi by omega. Agreed? So this you'll square it. A plus B sine omega t plus pi by 3. This will be whole square dt 0 to t, and this will be t. So first we will expand this using A plus B whole square formula, then expanding, then squaring, then integrating, substituting limits will get the answer. Already conceptually you should have learned. जब आपका टीचर पढ़ा रहे सब समझ दिस द कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे थे. इसका एंड फॉर्मूला विल कंक्लूड IRMS
is equal to a square b by root 2 whole square. ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 6 है 6 स्क्वायर बी का वैल्यू कितना है √56 by √2 whole square. So this will become IRMS is equal to 36 56 by 2 will be 28. So this everything will become 64. This will be 8. Okay, sir. ये equation कहाँ से आप formula लेके आए? This one only will expand. इसका expand कर लो. This will become next step will be IRMS square equal to 1 by t integral of 0 to t a square b square sine square omega t plus pi by 3. Next 2ab dt. This you integrate. Sine square again आपको integrate करना है. 1 plus cos 2 theta by 2. 1 plus cos 1 minus cos 2 theta by 2. Integrate, solve it. आप जब simplify करेंगे, the formula will end up this much. Okay, fine. और नहीं तो AC सर्किट जो हमारा चैनल है उसके यहाँ पे श्रीधर सर फिजिक्स या फिजिक्स न्यूमेरिकल जेई वहाँ पे हाउ टू simplify this equation I have shown the proof. Just refer that. There's n formula. Please do remember. This is called like a DC component. This is called like a AC component. Fine. इसका phase angle. Okay, fine. या pi by 6 या pi by 4, pi by 3, 30 degree, 60 degree. कुछ भी रहने दो. ये फर्क नहीं पड़ता है. This formula will just it will be this much only. Okay, next we'll take the another question. In an AC circuit, in an AC circuit, the instantaneous current is zero when instantaneous voltage is maximum. In this case, the source may be connected to. Instant current is zero when the instantaneous voltage is maximum. Current leads the voltage across the inductor. Means इसका क्या मतलब है ऐसा like if you draw the when current voltage is maximum, voltage का curve will be dependent on cos. Current का जो curve है, so this will be dependent on sine. This will be voltage. Okay, fine. तो ये जो रिलेशनशिप है दिस वन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हम प्लॉट करें करंट और वोल्टेज का. So it happens like across inductor, current leads the current lags the voltage, or voltage leads the current. This when you connect inductor across pure AC source, this is what happens. Agreed. So this now pure inductor possible. Pure capacitor, when the incident voltage is maximum across capacitor, ये जो diagrams है my across pure capacitor check कर लेंगे एक बार. Across pure capacitor, current will lag the voltage. Current will lead the voltage. When the incident voltage is maximum, in this case,
द सोर्स मे बी कनेक्टेड टू, और यहाँ पे ले लो तुम, when voltage is maximum current will be zero. Then I'll plot for, graph for this. इसको हम प्लॉट करेंगे. when current is maximum, यहाँ पे आपको वोल्टेज विल बी जीरो. वोल्टेज का कर्व इस तरह से आता है. तो ये हो गया आपका करंट, ये हो गया आपका वोल्टेज. तो यहाँ पे भी जब वोल्टेज मैक्सिमम है करंट विल बी जीरो. नो, दिस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ये जो करंट का ग्राफ है, यहाँ पे लुक अक्रॉस कैपेसिटर भी जब वोल्टेज मैक्सिमम है, so what is the current? Current will be zero. I think this condition is satisfied even for pure capacitor circuit. It's satisfied for pure inductor circuit. मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ. दिस इज प्योर इंडक्टर, दिस इज फॉर प्योर capacitor. And it can happen for combination of pure inductor and capacitor also. दोनों सीरीज में लगा देंगे, दोनों को सीरीज में लगा देंगे. इंडक्टर कैपेसिटर, यहाँ पे एक्सी एक्सएल कौन सा भी ज्यादा रहने दो. इफ एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, द नेट विल बिकम इंडक्टेंस. then it will behave like this. The circuit will be like this. If XC greater than XL, the circuit will be like this. I think still satisfied, no? So we'll pick up this option. So what about resistor? Across resistor, current and voltage will be in phase. When voltage maximum, current will be maximum. When voltage zero, current will be zero. This resistor will happen like this. Resistor, this is VRMS. This happens across resistor. See, there's a basic concept. बिना कॉन्सेप्ट पढ़े चुपके आके ओ ये क्वेश्चन लेके टाइम बर्बाद मत करो. जाके पहले पढ़ो the theory, concepts, have a concept clarity, then come back, think on the problems, use the formulas. Definitely you can manage exam. Exam is a test of knowledge. Using, you have to learn. पढ़ के एग्जाम तैयारी करना है. बिना तैयारी करके अगर आप एग्जाम लिख रहे बोलते नो यूज. तो पहले पढ़ो ठीक से, एक 30%, 50-60% सिलेबस पढ़ो, उसका फॉर्मूला जो भी याद कर लो. देन कम एंड सॉल्व द प्रीवियस मीन्स वेरी इजी. Okay, this total, this is the April shift we have completed. Okay, fine. Next video I'll upload the January shift. Okay, kids. Thank you very much. Please do subscribe. Please do subscribe, share our channel. It's a very small channel where we are growing because of your help. बाकी सभी वीडियोस लाइक हर एक चैप्टर का मैं हिंदी में अपलोड कर रहा हूँ मेंस का. मेक यूज ऑफ इट. Okay, kids. All the best. Do well, prepare well, revise all formulas, read concepts. We'll meet again in the next class. Thank you. Take care.